वेलकम बैक टू डॉक्टर मू। एज प्रॉमिस्ड आज हम एक डिफरेंट मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज होम्योपैथी। एंड आई हैव अ गेस्ट विद मी विच इज नंदिनी। शी इज अ फाइनल ईयर होम्योपैथी स्टूडेंट एट NHMC दिल्ली। तो आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं होम्योपैथी के बारे में। तो विल स्टार्ट। सो हाउ डिड यू स्टार्ट नंदिनी? व्हाट इज BHMS? Firstly, a lot of people don't know what actually BHMS means. जैसे मैं कहीं जाती हूँ and they ask me like what are you doing? So I say BHMS. So like, what is BHMS? So guys, basically BHMS का full form है Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. It's practical and theoretical medical practice in the field of homeopathy. So स्टार्ट तो ऐसे हुआ जैसे हर नीट एस्पिरेंट का होता है। अच्छा, सो वी कैन आल्सो गेट थ्रू नीट से ये। हाँ, एक्चुअली सो फॉर एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यू हैव टू लाइक क्रैक द एंट्रेंस ऑफ नीट, बी इट होम्योपैथी, यूनानी और लाइक आयुर्वेदा। So firstly, like every other NEET aspirant, I was also preparing for MBBS, but MBBS नहीं हो पाया, so I opted for Ayush. So Ayush के अंदर basically other forms of medicine, system of medicines आते हैं. So you have your choice whether you want to go for Ayurveda, homeopathy or Unani. So that is again. So मतलब नीट देकर ही आप Yes. So NEET के बाद there are two different sites. One is for like you for counseling for this MBBS, and there is different for Ayush. So you have to like opt for Ayush, and then you get to your things. Homeopathy, Ayurveda, whatever you want. Okay, so you get through Ayush की counseling. Yes. And ठीक है. So नीट हो गया. ओके, सो ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स लाइक कितना? जैसे MBBS में इट इज 4.5 years प्लस 1 year इंटर्नशिप. तो तुम्हारे में होम्योपैथी में कैसे होता है? Homeopathy is also like 4.5 years of college and then 1 year of internship or practice. अच्छा, ओके. और जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा हैज ए इंडियन ओरिजिन, ठीक है? तो ये कहाँ से आया होम्योपैथी? क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों को लगता है कि शायद इंडियन ही हुआ है, बट आई थिंक नहीं, it is actually homeopathy is practiced in India. The prevalence is much higher in India, but it started from Germany. The founder was Samuel Hahnemann, Master Samuel Hahnemann, and he was an allopath himself. Oh, अच्छा. So he created this field of science, homeopathy, in I don't know 1800s, I guess. अच्छा, ठीक है. सो MBBS में हमारे 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लाइक एनाटॉमी पूरी इंग्लिश वो सब. तो होम्योपैथी में कैसे क्या सब्जेक्ट्स हैं और कितने? Even in homeopathy we have the same subjects as any MBBS or Ayurveda student has to study. We have all of the subject plus we have 3 more subjects जो हमारे medicines के ऊपर based है. अच्छा. So that is laboratory, organon and MM. So that is one 3 subjects that we have to study separately other than the subjects that you have. अच्छा, ओके. 19 सब्जेक्ट्स हैं. बट आई थिंक डू यू थिंक तुमको कैसा फील होता है? डू यू थिंक कि इट इज थोड़ा एडेड बर्डन है और इट गोज हैंड बाय हैंड, मतलब साथ में हो जाता है आराम से, या उसके लिए एक्स्ट्रा तुमको एफर्ट देना पड़ता है? डू यू थिंक ऐसा कुछ है? I don't think it's an added burden, but it's actually good that you get to know about other fields of medicine. Like we have to study modern pharmacology also because it is clear that a lot of majority of Indians or people go to allopaths for their treatment first. Their first priority is allopathy. So a lot of our patient rush is after allopathic medication. They have a history of allopathic medication. So we have to study modern pharmacology in order to prescribe medicines. कहीं कुछ further reaction या कुछ ना हो जाए. So that is why it is important for us to study both the medicine. So I think कि ये उससे भी आगे है कि वाओ लाइक एलोपैथी के बाद भी अगर कुछ वो हो जाता है so you go for होम्योपैथी, मतलब उसका भी वो है. नहीं, it's actually good that you get to learn
learn a lot of things and you get to know this deep knowledge about both the subjects, both the system of medicine. दोनों फार्माकोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में वो तुम लोग भी पढ़ रहे हैं. ओके, सो ये भी बहुत अच्छी बात है. सो जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, जैसे एनाटमी में हम कैडावरिक डाइसेक्शन करते हैं, कैडावर बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, डेड बॉडी, जिस पे हम सीखते हैं. देन फिजियोलॉजी में हम ब्लड ग्रुप्स ये सब करते हैं, बायोकेम में यूरिन एनालिसिस, ये सब. हमारे लिए ऐसा कुछ प्रैक्टिकल्स की इम्पोर्टेंस कुछ है, ऐसा कुछ होता है? The curriculum is almost the same, be it the theoretical part or the practical part. We also have to do the practicals, blood groups, urine analysis and all. And this dissection, it is practiced in a lot of colleges, but as of now हमारे कॉलेज में तो 2-3 साल से नहीं हो रहा है. I don't know the reason, but it's listed in the curriculum. ओके, बट आई ऑल्सो थिंक कि तुम्हारे में जैसे आई थिंक सर्जरी को इतनी वो नहीं देते, तो आई थिंक इस वजह से हो सकता है. डाइसेक्शन नहीं, दैट इज तो सम डिफरेंट थ्योरी, बट हमारी पोस्टिंग्स तो एक्चुअली होती है, सर्जरी एंड गाइने पोस्टिंग्स होती है हमारी. उसमें वी गेट टू लर्न एवरीथिंग, बी इट सूचरिंग एंड ऑल, एवरीथिंग सर्जरी केसेस. एंड ऑल्सो फॉर दिस डाइसेक्शन में भी मैं बोलूँ क्या होती है, curriculum is almost the same, be the theory part or the practical part. We also get to experience all the dissection stuff, and the practicals are almost same, blood groups and urine analysis, ये सब होता है हमारे. ओके, सो आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन या फिर सब कुछ एक जैसा ही है. आई थिंक इट्स जस्ट द मेडिसिन. It's just the medicine part that is different. हाँ, जैसे ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पार्ट जो होता है, Yes. ऐसे आयुर्वेदा में जैसे डिफरेंट था कि हाँ वो उस तरीके से करता है. बट आई थिंक इट्स ऑल सिमिलर, एंड इट्स ऑल्सो बीइंग अ डॉक्टर, जैसे डॉक्टर्स को जैसे एमबीबीएस में आपको वो करते हैं, तो एग्जैक्टली द वे सिमिलर. Yes. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक नंदिनी की व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीएचएमएस? जो ये रियलाइज की कुछ लगता है तुमको कि आगे फ्यूचर में कुछ, जैसे गवर्नमेंट ने भी काफी कुछ आई थिंक इस पे जॉब्स है, एंड बीएचएमएस के बाद क्या ऑप्शन मतलब अगर कोई करता है तो? So the scope of BHMS is as such that you can go for MD. हमारे जो सब्जेक्ट्स में MD होता है, 3 साल का होता है. You can go for MD, or you can start your practice at your clinic as a homeopath, because you don't need any further like MD or specialization as such. हाँ, like MBBS में. MBBS में होता है. We don't need as such specialization. We can start our practice ये बैचलर डिग्रीज के बाद. ओह वाओ, तो जैसे एमबीबीएस में ऐसा होता ही है कि जो लोग होते हैं मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि एमडी डॉक्टर के पास ही जाते हैं, बट आई थिंक बीएचएमएस में तो नहीं, यू आर सर्टिफाइड होम्योपैथ. BMD वो एक एडेड benefit है दैट आप MD हो, बट एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता बैचलर और MD में. MD is for people who want to go for colleges, apply for college teachers or professors. Okay, so what do you think? Is it a good career option in India? I think in India तो it's very good because I feel it's the second largest system of medicine in the world, and in India तो it's very good. हाँ, होम्योपैथी का The आई थिंक बहुत से हम लोग भी कभी ऐसे होता है ना जिससे कि यार ये चीज तो होम्योपैथी से ही ठीक होगी है. आई थिंक क्रॉनिक इलनेसेस कुछ भी ऐसी है, दे गो फॉर होम्योपैथी. सब I कुछ think लोग chronic illness and लोगों में ये बहुत चीज़ है that if you have something skin problem they go to a homeopath because there's it's not there's this कोई साइड इफेक्ट का कम चांसेस है शायद. नहीं साइड इफेक्ट का नहीं, बट होम्योपैथी में स्किन केसेस में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. सो मे बी दैट्स व्हाई. मे बी आई हर्ड, जो मेरे को ऐसा लगता है, मे बी इट्स अ बिट स्लो बट इट्स रियली इफेक्टिव, ऐसा मुझे. I think it's a misconception that homeopathy is slow. ओके. It is slow if you are coming with a very advanced pathology cases, so it will take time to heal. But if there's any acute case, so there are two cases, like if someone is coming with an acute history or someone is coming with a chronic history, so it is like obvious that chronic history को like chronic case को deal करने में थोड़ा time लगेगा. But I've seen results in
a single day in acute cases also. So this is a misconception that homeopathy is slow. It just depends on the case and the history and the pathology. Okay, so looking at her, I think India में भी काफी अच्छा स्कोप है होम्योपैथी का. So अगर आप PHMS करते हो, if you take it as a career option, I think you're going to do really well in future. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. वो बस start करने का होता है. Exactly what do you feel like? अब तुम PHMS कर रही हो. So what do you think? Do you feel कि यार MBBS? Do you still feel कि MBBS ही करना चाहिए था यार? You're just कि तुम happy हो कि हाँ, this is the best thing I'm doing. I'd be honest, I used to feel this कि MBBS हो जाता तो better था, like till first year, because I did not know much about this medicine. But as now I've entered final year, I know all the things, all the tricks about this medicine. I feel homeopathy को ही मैं आगे continue करना चाहूँगी, and I feel this is my perception that homeopathy works like. The homeopathy is the best medicine if I want to see it. But first year में मेरे जैसे बहुत बच्चे थे जो were like a little confused that they want to opt for homeopathy. मतलब उनका 90% यही था कि they still want to crack NEET and go for MBBS. But as we studied further, we understood the deeper aspect of homeopathy, its roots. So now I feel that homeopathy is the medicine that I want to continue and really. Wow. So बहुत अच्छा लगा मुझे. I think this was we really needed, and if NEET aspirants को ये मैं बोलना चाहूँ कि I think it's also a very good career option. मतलब MBBS और I think now we should discuss about the fee structure जो main I think difference बहुत मतलब difference आता है. What is the score you expect? Like अगर आप NEET aspirant हो उसके बाद क्योंकि NEET से admission counseling के through, so what is the score you expect and what is the fee structure colleges में? I feel for like in homeopathy also you have government medical colleges and private, and there are a lot of private colleges if you want to apply. For that you just need to qualify the NEET, whatever the score is, जो qualifying score होता है. But for like government medical colleges, state पे depend करता है कि कौन से, like if you are trying for a government college in Delhi, so all India quota के हिसाब से I think you have to score around 580 to 600 to get Obviously it's a government college. हाँ, Delhi government college. But if you are from the state quota of Delhi per se, so I feel 400 to 500 would be enough if you have Delhi quota and you want to get into a Delhi college. Okay, so it's a good option अगर आपका 400 के अराउंड स्कोर आ रहा है, because 400 पे आजकल MBBS मिलना थोड़ा मुश्किल है. हाँ, if you have the state quota. है ना? हाँ, if you have the state quota, yeah, right. तो वो हर स्टेट में वैलिड होगा obviously, सारी स्टेट्स के हिसाब से. नहीं, डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेट से हो, whether हाँ, मतलब वही कौन हर से स्टेट स्टेट का का डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है आपके पास. Yes. Okay. And what are the top colleges जिसपे एस्पिरेंट्स को मतलब वो करना चाहिए कि ये बेस्ट कॉलेजेस है होम्योपैथी के, अगर आप यहाँ से करते हो then it's going to be really good. So what are the top colleges? Which colleges? Majority of students is NHMC Delhi, and then they go for NIH Kolkata, I feel. Okay. So yeah. So these are the top colleges होम्योपैथी में करनी है गवर्नमेंट से. So I think this is the best. कॉलेजेस का लाइक व्हाट इज द डिफरेंस गवर्नमेंट के फी स्ट्रक्चर में और प्राइवेट के क्या फी स्ट्रक्चर रहता है? लाइक एमबीबीएस के प्राइवेट तो काफी एक्सपेंसिव लाइक 15 लाख to 20 lakhs का रहता है. व्हाट इज योर फी स्ट्रक्चर? I think the fee structure depends on state to state, but if you are applying for Delhi Government College, so हमारे कॉलेज में जैसे the fee for like 1 year is 1250 rupees. So मतलब 5000 में सारा होम्योपैथी हो जाएगा. काफी अच्छा है यार, इतनी तो पॉकेट मनी बच्चे ऐसे वो कर देते होंगे. अमेजिंग. And for I think private colleges, it's almost 5 to 6 lakhs per year. आई थिंक दैट इज वो डिफरेंस. लेकिन मतलब पैसे हैं काफी, लेकिन फिर भी आई थिंक एमबीबीएस के तो एंड देन यू गेट टू वर्क रियली वेल. आई थिंक
So what is the concept behind this medicine? Like homeopathy किस जैसे क्या होता है? Like I don't know. I think people don't want to know. So if you know something about it. I also feel that a lot of people don't really have the knowledge of how does this system of medicine actually works. Homeopathy is based on the principle of like cures like. That is like also in Greek is similia similibus currender, as proposed by our master Samuel Hahnemann. So it just basically means that like two things, two concepts. We don't take the like we have this vital force in our body that protects you and keeps your body working and like it's not immunity, we call it vital force. So it's the concept just that the derangement of vital force by some other means of forces like outer forces which we call miasms. तो हमारे पे बैक्टीरियल या वायरल डिजीजेस नहीं बोलते हैं, माइजम्स बोलते हैं. वो आपके वाइटल फोर्स को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सारी बीमारियां आती हैं. सो एंड आर रेमेडीज, वी डोंट कॉल मेडिसिन रियली, वी कॉल रेमेडीज. तो हमारी रेमेडीज बेसिकली आपका वाइटल फोर्स वापस स्टेबल करती है एंड दैट इज हाउ योर बॉडी हील्स योरसेल्फ. तो पेरेंट्स आर हैप्पी एमबीबीएस कर रहा है हमारा बच्चा, डॉक्टर बन रहा है. व्हाट वर योर पेरेंट्स रिएक्शन? लाइक व्हाट वर दे अबाउट इट? कैसा था? My parents' reaction was fine only. मतलब they were not that excited कि हाँ because you know. Initially तो तुम भी नहीं थी तो. नहीं, I wasn't feeling as good. The thing is, when my brother was like little, he used to take homeopathy. So homeopathy इतना तो पता था कि काम करती है because he had this severe cold and cough. हमेशा मतलब whenever winters used to come, so he got better by homeopathy. So they knew that homeopathy काम तो करती है. Oh, so they had a trust. Yes. और फिर तुम आप पढ़ भी हो, so you have more trust. They had an experience with homeopathy, so they were fine. But yes, they were also expecting कि MBBS में जाता तो ठीक होता, but now तो they are like good. चलो अच्छी बात है because you'll do great in life obviously. और तुमको जब तुम करोगी you'll start earning, so obviously you will feel confident, you'll feel happy about it. I feel it depends on the person itself. चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर आप पैशनेट हो उसको लेके तो I think you can do well in that field. Exactly, like you just need to decide and be passionate about it. That's how you go about it. क्योंकि कोई भी career option, I think it's a very good thing. So okay, Nandini, any criticism about homeopathy you hear? Like लोग थोड़ा इसको अगर ऐसा कुछ है तो. नहीं. And how do you deal with it? How do you come out of it? Like there's no lie that criticism तो है homeopathy के against because a lot of people are not really educated about it, so that is fine. So do you think कि there is some criticism about homeopathy, like लोग थोड़ा वो करते हैं? How do you deal with it? Like how do you come out of it if there's any? There's no lie that there's certain criticism against homeopathy because a lot of people are not really aware or educated about the system of medicine. They don't really know how does it work. So why would they even trust कि homeopathy कैसे काम करता है? Because I've seen in like patients they have this thing that they want immediate effect. और कभी-कभी homeopathy से immediate effect नहीं मिलता है because I feel it depends on the homeopath that you are seeing. Okay. It is, I think it depends on the homeopath that you are seeing because not every homeopath is a good homeopath. Because in homeopathy we say it's an art and skill because you have to develop it, you have to practice it. So yeah, so I think that is what. I think it depends on the homeopath that because in homeopathy we say homeopathy is an art and science of medicine. So the homeopath
should be skilled enough, to practice medicine. Because I'll just give you an example. जैसे कोई हमारे पास आता है फीवर के साथ, तो in allopathy you what do is you have that PCM for paracetamol दे देते हैं. But in homeopathy it is based on individuality of the person. So हो सकता है कि like दो दवाइयाँ जैसे हमारे पास we have aconite and not just fluid, there are a lot of medicines but I'm just telling you the. So हमारे पास basically aconite है और first से belladonna है. So ये उस पेशेंट पे डिपेंड करता है कि हमें उसे कौन सी दवाई देनी है. हो सकता है दोनों को फीवर हो लेकिन एक इंसान को एकोनाइट जा रही है और दूसरे को बेलाडोना जा रही है. सो वी डोंट हैव दिस थिंग कि सबको एक ही दवाई जा रही है. इट मोर ओवर डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन, बिकॉज वी हैव दिस थ्योरी दैट whatever that disease that it's showing on your body, it's the root of it's something deep seated lying under your, that whatever the symptoms that your body is showing, there's something deep seated disease underlying inside your body, so that is why the symptoms are showing up. So in homeopathy we also say that you need to cure the person, not the symptoms or the disease. Oh, okay. So I think the main whole concept of making this video was also this कि क्या है लोगों को, and especially need aspirants या बच्चे या जो भी, even parents, everyone, कि what is homeopathy and how do you do it. So I really like it. I really enjoyed talking with you, Nandini. And now we'll have a rapid fire session kind of a thing. It will be a fun thing. So, and I'll ask you a one line. You have to give an answer in one word. Okay. So सबसे पहले one thing about homeopathy. One line about homeopathy. मीठी गोली. Right. One line about allopathy. Needles. Okay. Oh, yeah, right. Homeopathy or allopathy? Obviously homeopathy. I think you should also try homeopathy. Okay, I will. ठीक है. So top college of homeopathy. Like NHMC Delhi. I would say NHMC Delhi. Okay, rank-wise. Yes. So fun fact about homeopathy. Permanent cure. Okay, so that's it for the rapid fire round. It was really fun talking with you, Nandini. I had a very good time. Hope you guys liked the video. Please like, share and subscribe. Please subscribe Nandini's channel as well. She has really fun videos to offer. And we are just growing, so please keep supporting and please subscribe. Yes, hit the bell icon, like, share, subscribe, whatever that. Okay, so we'll keep coming with more such videos. Yes. Thank you. Bye bye.